Hello everyone. As we all know that tobacco kills. So today on 31st of May, which is celebrated as No Tobacco Day, we the team of IDA Mohali is here in front of you with a small endeavor in this video to make you all aware of the hazards of tobacco and to spread this awareness to quit tobacco. आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस दिन के उपलक्ष्य में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन डेंटल क्लिनिक्स में जब हमने पिछले कुछ महीनों में हमने पेशेंट्स देखे तो हमने ये देखा कि काफ़ी पेशेंट्स बहुत किस्म के छाले लेकर हमारे पास आते हैं जिन छालों का कारण तंबाकू होता है। सो आज के दिन मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहूँगा हम सब के लिए, डेंटल सर्जन्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जो तंबाकू की आदत से ग्रस्त हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन माउथ, अपने मुंह की खुद की जांच करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तंबाकू छोड़ने के इस लड़ाई में। क्योंकि जब भी हम मुंह की चेकिंग की बात करते हैं हम सिर्फ ध्यान देते हैं दांत या जीभ पे। हमें डॉक्टर्स को और मेडिकल पर्सनल्स को, आम जनता को ये बात भी समझानी है कि मुंह में ऐसे बहुत इलाके हैं जहाँ पे तंबाकू की वजह से असर पड़ सकता है, जैसे कि गाल हुआ या जीभ के कोने हुए या आगे होंठों का हिस्सा हुआ जहाँ पे शायद एक सफ़ेद झिल्ली पड़ी हो या कोई लाल सा छाला हुआ हो और ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द करे। इसलिए कई बार इंसान को जो तंबाकू ले रहा है जिसके अंदर ये छाला हुआ है उसको पता ही नहीं लगता। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर है इन छालों को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए, ताकि हम उसका अच्छे से इलाज कर सके और पेशेंट बाद में तंबाकू छोड़ने में कामयाब हो सके। सो आज के दिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ पे हम लोग एम्फेसाइज करें और होपफुली बहुत जल्दी हम एक तंबाकू फ्री सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू। Smoking affects our immune system. It decreases the blood flow to the gums and reduces the natural ability to fight infection, leading to all the gum diseases and eventually tooth loss. Every puff of cigarette smoking releases about 7,000 chemicals. Out of this, 69 leads to cancers. Tobacco affects our immune system, leading to increased severity of COVID symptoms as well. So dear friends, consult your dental doctor to help you quit tobacco. Thank you. ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ। ਤੰਬਾਕੂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਚਬਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਸੇ ਯੈਸ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਨੋ ਟੂ ਟੋਬੈਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। The more times you try to quit tobacco, the greater the chances of successfully quitting. So keep trying, you got this. Friends, 31st May is celebrated as World No Tobacco Day. My message to the people is, please keep away from tobacco in any form. Every year, 6 million people in the world died only due to tobacco consumption. And sadly, 28% of them are the children who are passive smokers. Smoking and chewing tobacco causes many health hazards, and amongst all the cancers, 30% of them are oral cancers. Government has already banned smoking in public places. These days, when all of us know
that immunity is the savior. It is our duty to maintain the health of the lungs. Maintaining healthy lifestyle and quitting smoking should be utmost priority. Remember, with every puff you inhale, you exhale health out of your life. Thank you so much. I pledge myself in my capacity as a healthcare professional to provide assistance to anyone who intends to quit tobacco. And in the end, I would like to say #commit to quit, which is the international theme for No Tobacco Day, marked on 31st May 2021. Thank you. by World Health Organization on 31st May 2021. So now I would like to hand over. Today, as we all know, is the International No Tobacco Day. So let's pledge ourselves, say just no to tobacco. Smoking, it leaves an unseen scar and it fills your inside with toxins and tar. What the cigarette ashes say, today is your turn, but tomorrow will be my turn that will be turning your body into ashes. So, all of us, let's unite together and just say no to tobacco. Thank you. We, the students of Dr. Harman Singh Judge Institute of Dental Sciences and Hospital, in our capacity as healthcare professionals, pledge to refrain from tobacco in any form, to be role models to quit tobacco crusade, to prompt make tobacco users around me aware of the harmful effects of tobacco, to make my patients think about and help in quitting, to equip myself with latest knowledge related to quitting tobacco, to provide all necessary help and make appropriate referrals for my patients interested in quitting, and above all raise awareness about benefits of quitting tobacco and sources of health available. Hey all, do you know what's the new trend in the market? It's quitting tobacco. My dear friends, you all can quit tobacco and it's much easier than quitting your precious life. A dentist can help you in quit tobacco. Seek assistance, ask for help and quit this bad habit. Thank you. Friends, good afternoon. Today is World No Tobacco Day. What we are fighting is an addiction like any other addictions in this world, like alcohol, like drugs. Similar is the addiction to tobacco. Tobacco with its varied forms which is available in our country, we have to fight each and every kind of tobacco usage. How do the companies play in the hand, the addicts play in the hand of the companies are that they add certain materials like nicotine, for example, in cigarettes, or they actually add synthetic products, addicting drugs into lots of products which go into khani, tobacco products for chewing, etc. Also, certain materials like slaked lime, tuna, that has been added onto these materials, which creates a very microscopic cut on the tongue of the patient. Due to that cut, there is an instant absorption of all these addictive products and they get right into the brain, and hence what we call as a tobacco kick comes to the patients instantly. So whenever their body goes into a withdrawal symptoms, as soon as they go back to the usage of the product, it immediately from the tongue, from the floor of the mouth, from the cheek mucosa, lungs, which is having lots of blood supply, immediately it gets into the bloodstream and hits the brain. And that is how when they say सिगरेट पीते ही या एक तंबाकू वाला पान खाते ही मेरे दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं. So that is how it works on their body, into their psychology, and they slowly become addictive, and slowly they become chain smokers or are continuously for the full day onto chewing tobacco products. Friends, I normally sit with them, I counsel them verbally first, and I always ensure that they get this story right, that if at all they have to
leave the addiction, they have to immediately do it. Plus, they have to ask for support from their peer groups, from their family, who will support them. Requesting you all, whosoever is using any form of tobacco, whether it's in chewing form or in smoking form, please quit tobacco, as it is not only affecting you but your family too. So just the sake of health of your family and yours health, let's pledge today to quit tobacco and motivate yourself by saying, I can, I will, I must. Thank you. Our message is especially for the youngsters. Most of the youngsters say they started smoking because they thought it was smart. As dental care professionals, we strongly suggest all the youngsters to quit smoking because it is much smarter. Every time you light up a cigarette, you are saying your life is not worth living. Your craving is temporary, but the damage to your lungs is permanent. A cigarette a day keeps the doctor in pay. अगर ये सब भी काफी नहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, then special 2 lines for you all. मेरी सलामती की दुआ जब वो करती है, मेरी जेब में रखी सिगरेट भी टूट जाया करती है. So guys, please commit to quit tobacco, at least for the sake of your loved ones. Quit tobacco, quit smoking. Thank you. Thank you. नाउ ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सब ने आपको बताया कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. मैं आपको कुछ ऐसे एविडेंस दिखाना चाहती हूँ या आपको ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो चेंजेस आपकी बॉडी में होंगे आफ्टर यू क्विट स्मोकिंग. सो हमारे पास एविडेंस है कि विद इन 20 मिनट्स ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग योर ब्लड प्रेशर एंड योर हार्ट रेट नॉर्मलाइजेस. 12 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. 2 से 12 हफ्तों में योर सर्कुलेशन इम्प्रूव्स एंड योर लंग फंक्शन ऑल्सो इम्प्रूव्स. 9 months coughing and shortness of breath improves. After 1 year, risk of coronary heart disease is reduced to half that of a smoker. 5 साल में आपके स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. इन 10 years, रिस्क ऑफ लंग कैंसर फॉल्स एंड इन 15 years, रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इक्वलाइजेज विद दैट ऑफ अ नॉन स्मोकर. अब आप खुद देखिए और सोचिए, इट इज़ लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट हाउ मच बेनिफिट यू गेट आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग. थैंक यू सो मच. Hello friends, today on World No Tobacco Day, the theme is Commit to Quit. And as a corona survivor myself, who was on ventilator for 15 days and survived death by a whisker, knows the value of life far better than before. And I think everyone should value that one precious life God has given us. So it's very important to spread awareness about the risks of tobacco use. And especially as dentists, we must make people aware that it is a slow poison which increases the risk of very serious diseases like heart attack, brain stroke, cancer, especially mouth cancer. So say yes to life and say no to tobacco. Burn calories, not cigarettes. Thank you. Second-hand smoke hurts them too. Quit smoking. वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. तो इससे पहले कि चिड़ियाँ सारा खेत चुग जाएं और हम मात्र दर्शक बनकर रह जाएं, छोड़ दो इन बुरी आदतों को, छोड़ दो इस सिगरेट, इस तंबाकू को. कुछ पल का नशा हमारी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है.